So good morning students. So in the last class I have shown you I think question number 3 also. Question number 1 minimize cost था and question number 3 maximize the profit. तो ये अनबाउंडेड पहले वाला अनबाउंडेड का था एंड दिस इज फॉर बाउंडेड एंड बाउंडेड का बहुत एग्जांपल्स है अभी, तो इसलिए हम अभी पूरा क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट आई कैन शो यू अप टू द पार्ट. I can show you for the first part, that is for formulation, how to formulate the question. तो वो पार्ट हम दिखा सकते हैं, बाकी बात ग्राफिकल तुम लोग कर सकते हो, तो बाकी पहले का जैसा ही होगा. So I don't want to go for it again. So question 4. In question 4 you have given that a manufacturer produces nuts and bolts. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B. तो इसमें दो रिसोर्स होगा, दो टाइप का मशीन है A एंड B, जिसमें हम लोग नट्स एंड बॉल्स प्रोडक्शन कर रहे हैं. सो इसमें हम लोग को दिया है जो 1 hour ऑफ मशीन एंड 3 hours ऑफ मशीन B टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स. तो नट्स में हम लोग का क्या आ रहा है वो दे रहा है. सिमिलरली इन बॉल्स ऑल्सो, तो हाउ टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बॉल्स. So it takes 3 hours of on machine A and 1 hour on machine B, and he earns a profit. Profit बोले तो for the package of nuts he earns a profit rupees 17.50 and rupees 7 per package on balls. तो nuts and balls में profit क्या होता है वो भी दिया हुआ है. Now we have to find out how many nuts and balls to be produced to get the maximum profit in a day. तो इफ़ इट ऑपरेट्स फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स ए डे, मतलब मशीन्स को एक दिन में 12 आवर्स से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो दैट इज ए रेस्ट्रिक्शन गिवन. नाउ हम यहाँ में हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स होगा टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. सो इसमें जेड होगा प्रॉफिट, एंड यहाँ में नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पैकेज ऑफ नट्स एंड बॉल्स होगा वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. तो हम लोग को अभी एज्यूम करना होगा लेट let the manufacturer produces x number of x and y numbers of package of nuts and balls respectively, and that be the total profit. So see, now you can show the data in a table. Now the given data can be tabulated as follows. तो पहले हमको डाटा को दिखाना है. सो मेक वन टेबल. टेबल के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज करने से बेटर होगा. वी कैन यूज द रेक्टेंगल हियर. पहले का जैसा ही होगा, इसमें क्योंकि दो टाइप का ही है, नट्स एंड बॉल्स है. तो आफ्टर दैट you take lines, and lines better you take in different color so it will be distinct. तो यहाँ में हम लोग का 4 कॉलम्स होगा.
1 2 2 and 3 then 4. So then यहाँ में हमको रो कितना सही होगा? So we need रो 1 रिसोर्स 2 है एंड प्रॉफिट तो 4 रो टोटल। तो एक हो गया ये, उसके बाद 2 मोर। Now they have to write a resource and there are the package of nuts, so x number of nuts and package of balls, कितना है? y number of balls। and in this case तो restriction इसमें है in machines, that is availability होगा, इसमें कितना available होगा machine, requirement नहीं होगा इसमें available। तो फर्स्ट आ गया machine A एंड मशीन B, और दोनों में हम लोग का आवर्स दिया होगा। तो they are in hours, so resource they are in hours, so you can write here also। तो रिसोर्स जो है काम करते हैं, just one thing, resource in hour। so but profit जो है, profit they are in रुपीज़ होगा एंड दिस इज सेम एज दिस, तो ये इन आवर होगा। तो आवर है, इसको इस पर लिख के रख सकते हो, दे आर इन आवर। नाउ यू नो दैट नाउ यू कैन गो फॉर अ रेस्ट्रिक्शंस गिवन। तो पैकेज ऑफ नट्स के लिए कितना चाहिए? 1 आवर ऑफ मशीन है, 1 आवर ऑफ मशीन है एंड 3 आवर्स ऑफ मशीन बी। सिमिलरली फॉर पैकेज ऑफ बॉल्स you need what is given 3 hours of machine A, उल्टा हो गया इसमें, and 1 hour on machine B। तो नट्स में जितना A में सही उतना यहाँ में B में सही है, और यहाँ में जो B में सही है उतना A में सही है। and profits are given for package of nuts gets the profit of 17.50 rupees and for balls 7 rupees per package of balls, and both the machines are available for 12 hours at most, means maximum 12 hours. So these are restrictions given. So now you can formulate them. Now you can go to the next page and you can formulate them. तो उसके लिए now you have to take the Z. What is that? That is the profit. तो पर पैकेज ऑफ नट्स में 17.50 है, इंटू एक्स होगा, प्लस 7 रुपीज़ इन बॉल्स, तो 7y। तो इन दिस केस नाउ इट कैन बी written in different from without point also you can write. So if you write without point, so it will be I think 7 से डिवाइड होगा क्या?
ये 7 से डिवाइड है, सो यू कैन डू व्हाट, यू कैन टेक कॉमन 7, देन देयर विल बी 14 2.5x प्लस y। आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर होगा पहले से। सो दिस इज द थिंग, यू कैन टेक इट एज दैट। सो देयरफॉर नाउ you can formulate the question mathematically. So mathematical formulation is what? So now you can go for the mathematical formulation. क्या होगा? Maximize the profit, that is Z, 7 into 2.5x plus y, and subject to the constraints. The constraints क्या होगा? First machine for machine A में restriction कितना होगा? You can see the table. देखो ये हमें x 1 into x plus 3 into y टोटल 12 से कम होना है, 1 into 3 and 3 and 1 ना, तो अभी हम लोग को याद रह गया। तो 1 into 3 मतलब x plus 3y 12 से ज़्यादा नहीं होना है, और उल्टा होगा इसमें 3x plus y is equal to 12। तो ये दो है, एंड along with this, so this is the question. Now you can easily solve it by graph जैसे पहले किया था। तो after you can find out the solution and you can find out the maximum profit जो Z से मिलेगा। उसके बाद X and Y से हमको मिलेगा क्या, how many packets of nuts and balls can be produced in a day to get the maximum profit ना। X and Y से हमको number of packets of balls and nuts and balls हमको मिल जाएगा to get the maximum profit, or even to get the maximum profit by Z। तो ये है हम लोग का 4। तो ऐसे ही है, तो इसमें हर क्वेश्चन दिखाने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल सेम ऑलमोस्ट। सो इसीलिए तो अभी तुम लोग कुछ क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो, दे आर ऑलमोस्ट सेम टू दैट। 4 3 जैसा ही है, 5 से 6 से 7 है, तो ये सब सेम टाइप का है। तो ये सब these are all they are same as 3 4। so you just try it by yourself। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को दिखाते हैं। 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट लिटिल डिफरेंट इन स्केल देयर। So what's the difference we'll get there? To question 8, better we go to the next page. You take a new page. So question 8, you have given that a merchant plans to sell 2 types of computers। तो इसको हम क्वेश्चन को समझा लेते क्या दिया। इसमें 2 टाइप का कंप्यूटर मतलब सेल कर रहा है। तो इसमें एक को बोलते हैं डेस्कटॉप मॉडल, अनदर वन इज पोर्टेबल मॉडल, और द कॉस्टिंग्स गिवन फॉर ईच ऑफ द कंप्यूटर्स एज फॉर डेस्कटॉप मॉडल इट इज 25,000 एंड फॉर पोर्टेबल मॉडल इट इज 40,000 and he determines that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units। मतलब वो मार्केट सर्वे किया था और वो आइडिया किया था कि जो डिमांड है, डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स कभी 250 से ज़्यादा नहीं होगा। द डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर व्हिच द मर्चेंट शुड stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakhs, and if his profit on the desktop model is 4500 and portable model is 5000। मतलब इसमें हमको रेस्ट्रिक्शन भी दिया है कि वो मार्केट डिमांड देखा है जिसमें 250 से ज़्यादा नहीं होना है। उसके बाद वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी है, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो, 70 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं।
and profit in its computers in model it is given. For a desktop model it is 4500 and for a portable model it is 5000, and the costing for them also given as that gives you the investment 25,000 and 4,000. तो अभी इसमें जो डाटा दिया है हम लोग को निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट. सो इफ जेड क्या होगा, प्रॉफिट, एंड वी डोंट नो हाउ मच टू बी stock for both the models, so that the number of x and y you can take. So now we can do what, we can take x and y with the number of, let the merchant stock, let the merchant stocks x number of stocks, x number of desktop model, x number of desktop model, and y number of portable model. And Z be the total, profit. Now what is you can from the table इसमें इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हमको रिसोर्स तो वही दोनों है. So we can go by the conditions given there. First of all, if you go for a Z, what is Z? तो Z में हम लोग का आएगा, तो in desktop model it makes a profit of 4500, it will be like this, and in portable model it makes a profit of 5000. So that means we can take common here 500, so 9x plus 10y. Now the restrictions are what? Now let me complete that question. So if you go for the mathematical formulation, क्या होगा, तो you will get maximize Z, then 500, then 9x plus 10y, then subject to the constants. तो constants क्या आएगा, total number of units never exceed to 25 and 250 units बोला है ना, इसका number of units हो गया x plus y, it never be more than 250, मतलब less than or equal to 250 होगा. Then the second one is of the total investment 70 lakhs. तो total investment कितना होगा, costing for desktop is 25,000 x and costing for portable is 40,000 y, and should not be more than 70 lakhs. So 70 lakhs मतलब how many zeros will be there? Total 6 zeros you will get here. So if you divide by this, so there will be 25x plus 40y. तो 3 zeros को हम हटा सकते हैं, so you will have only 3 zeros there. Now finally if you divide by 5, you will have 5x plus 8y, then 1400. तो ये हो गया फर्स्ट, then this is second, ये दोनों को छोड़ दो, ये second हो गया, and then finally
you will have two inequations, that is your non-negative constraints. So that's the formulation, and now it's become the question. It will be unbounded, so you can go for it. तो तुम लोग को ट्राई करना ही होगा, विदाउट डूइंग तुम लोग नहीं कर पाओगे. जैसे हम बोला था 1 का जैसा है क्वेश्चन 9, क्योंकि क्वेश्चन 9 ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ डाइट, इवन क्वेश्चन 10 ऑल्सो. 9 and 10 दोनों सेम एज क्वेश्चन 1. So you should try them, and I'll finish this part just by completing 11. But after that, the most important part you have to go for, that will be next day. तो यहाँ में हमको कुछ क्वेश्चन दिया है, जिसमें हमको दिस इज अ मल्टीपल चॉइस, इसमें हमको इनइक्वेशंस दिया है. तो इनइक्वेशंस इसमें गिवन है द कॉर्नर पॉइंट्स. व्हाट इज गिवन? द कॉर्नर पॉइंट्स. सॉरी, पहले कॉर्नर पॉइंट्स नहीं दे रहा है, तो एक काम करते हैं. पहले हमको इनइक्वेशन दिया है. तो गिवन रीजियन determined by linear inequalities. तो क्या क्या inequalities है? Inequalities 2x plus y 10, x plus 3y less than equal to 15, y greater than equal to 0. और इसमें हमको दिया है the corner points are given as 0, 0, 5, 0, 3, 4 and 0, 5, and objective function is given as also given that objective function z equal to maximize z. सॉरी, एक काम करते हैं. इसमें बोला है कि द मैक्सिमम ऑफ z occurs at 3 and 4. So it is given that the maximum of z occurs at both occurs at both 3, 4 and 0, 5. तो हमको निकालना है कि रिलेशन बिटवीन पी क्यू क्या होगा. तो दोनों में ओकर हो रहा है, तो इसमें हमको बाकी और देखने का ज़रूरत ही नहीं है. जो भी रेस्ट्रिक्शन होगा, if maximum occurs at these 2 points, that means the value of z in both these points must be same. So therefore at these 2 points you will get the maximum value of z. So you can calculate the maximum value of z. Therefore value of z at
3 4 कितना होगा, कितना होगा 3 into P plus 4 into Q, and value of Z at 0 5 is what, 0 plus 5Q, finally 5Q. But these are maximum values, so they must be equal. Therefore obviously 3P plus 4Q must be equal to 5Q, क्योंकि दोनों मैक्सिमम वैल्यू है और दोनों मैक्सिमम वाला दोनों इक्वल होगा. So you will get 3P equal to Q. So that is the final relation between P and Q. So that goes to the option D, and that is the correct question. So that's all. तो बाकी तुम लोग क्वेश्चन को कोशिश करो, क्योंकि ट्राई नहीं करने से इसको जानना थोड़ा क्लियर नहीं होगा, बाद में प्रॉब्लम होगा. बट इट्स वेरी इजी इफ़ यू ट्राई बाई ग्राफ एंड इफ़ यू ट्राई सम क्वेश्चन, इट विल बी वेरी इजी. सर अभी तक हम लोग को 2 टाइप का मिला है जैसे हम बताया था, लेकिन और एक टाइप बाकी है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ये थोड़ा सा लंबा होता है, प्रोसेस इजी है बट क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है. सो दैट आई विल डिस्कस इन मिसलेनियस, क्योंकि हमें मिसलेनियस में सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो ट्रांसपोर्टेशन का है और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में है, एंड दैट यू हैव टू दैट आई विल शो यू. तो इसमें से एक हम दिखा देंगे, क्योंकि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, एक दिखा देंगे, तो बाकी तुम लोग को ट्राई करना होगा. लेकिन ये मिसलेनियस में तुम लोग को जो एग्जाम्पल्स है, ऑल एग्जाम्पल्स यू हैव टू ट्राई. एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11. एग्जाम्पल 11 इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. देखो इसमें बहुत लंबा है. 11 इट फिनिश जस्ट बिफोर एक्सरसाइज. तो इसमें बहुत कुछ पार्ट्स है जो हमको दिखाना है. तो यह में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है इन एक्सरसाइज. तो हम वो 2 क्वेश्चंस को दिखाएंगे और तुम लोग वही आइडिया से 2 में से एक दिखाएंगे, और तब हम लोग को यू हैव टू ट्राई वन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, दिस 10, एंड वन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट लेफ्ट इन एक्सरसाइज मिसलेनियस. और यह में और 2-3 क्वेश्चन तो दिखाना है और बाकी तुम लोग को ट्राई करना होगा. So that's all for today.